सो आज हम रॉबिन्स पैथोलॉजी का जो द सेल्स एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, द सेल एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। तो पहले रीडिंग मारेंगे, बाद में जो क्रिटिकल वर्ड है, जो भी मतलब ऐसा वर्ड जो मतलब हर किसी को नहीं आती है, जाहिर सी बात है, हम तो सब नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उस वर्ड को हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे एंड उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मतलब मैं पढ़ करके आपको सुना दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो पैथोलॉजी लिटरली ट्रांसलेट टू द स्टडी ऑफ अ सफरिंग। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये रॉबिन्स एंड कॉटन्स पैथोलॉजिक बेसिस ऑफ अ डिजीज। ठीक है, इस बुक से आज हम बुक रीडिंग करेंगे। सो पैथोलॉजी लिटरली ट्रांसलेट टू द स्टडी ऑफ अ सफरिंग। ठीक है, नाउ ग्रीक वर्ड जो होता है वो पाथोस। पाथोस का मतलब होता है सफरिंग एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। So more prosaically, the term pathology is invoked to represent the study of a disease. German to this opening chapter, Virchow coined the term cellular pathology to emphasize the basic tenet that all disease originate at the cellular level। ठीक है, thus modern pathology is basically the study of cellular abnormalities. Therefore, diseases and the underlying mechanism are best understood in the context of a normal cellular structure and function. Therefore, diseases and the underlying mechanism are best understood in the context of a normal cellular structure and function. It is realistic and even undesirable to condense the vast and fascinating field of a cell biology into a single chapter. Moreover, students of biology are likely quite familiar with many of the broader concepts of cell structure and function. Consequently, rather than attempting a comprehensive review, our goal is to survey some basic principles and highlights some recent advances that are relevant to the pathologic basis of a disease that is emphasized throughout the text. We hope this chapter will be useful to review key topics in normal cell biology as they apply to the area of pathology that are covered from chapter number 2 onwards. So, we hope this chapter will be useful to review key topics in normal cell biology as they apply to the area of pathology that are covered from chapter number 2 onwards। ठीक है, असल में चैप्टर नंबर 2 से आपका पैथोलॉजी स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे जानकारी दिया गया है। द जीनोम्स, the sequencing of the human genome represented a landmark achievement of biomedical sciences. Published in draft form in 2001 and more completely detailed in 2003. The information has already led to remarkable advances
in science and medicine. Since then, there has been an exponential decrease in the cost of sequencing and an exponential increase in data accuracy. This new information, now literally at our fingertips, promises to revolutionize our understanding of health and diseases. However, the sheer volume of the data is formidable, and there is a dawning realization that we have only begun to scratch the surface of its complexity. Uncovering the relevance to the disease and then developing new therapy remain challenges that both excite and inspire scientists and the uh, lay public alike. Non-coding DNA. The human genome contains roughly 3.2 billion DNA base pair. Within the genome, there are about 20,000 protein encoding genes comprising only about 1.5% of the genome. These proteins variously function as an enzyme, structural component, and signaling molecules and are used to assemble and maintain all of the cell in the body. Although 20,000 is an underestimation of the number of protein encoded in the human genome, given that many genes produce multiple RNA transcripts encoding different protein isomers. It is nevertheless startling to realize the worms composed of fewer than 1000 cells with genomes of only about 0.1 billion DNA base pair are also assembled using about 20,000 genes to produce protein. Even more surprising is that many of these proteins are recognizable homologs of molecules expressed in human. What then separate human from worms? The answer is not completely known, but the weight of current evidence suggests that much of the differences lies in the 98.5% of the human genome that does not encode protein. It has been known for some times that protein coding agents in higher organisms are separated by long stretches of DNA whose function has been obscure for many years, sometimes denoted as dark matter of the genomes. That viewpoint has subsequently been modified, driven by the multinational ENCODE Encyclopedia of DNA Elements projects that set out in 2007 to identify all regions of the genome that could be ascribed some function. The striking conclusion is that as much as 80% of the human genome either binds protein, implying it is involved in regulating gene expression,
or can be assigned some functional activity, mostly related to the regulation of a gene expression, often in a cell type specific fashion. It follows that while proteins provide the building blocks and machinery required for assembling cell, tissue, and organisms, it is the non-coding region of the genome that provides the critical architectural planning. Practically stated, the difference between worms and human apparently lies more in the genomic blueprints than in the construction materials. The major class of functional non-protein coding sequence found in the human genome are of the following. Figure 1.1. ठीक है. Now, promoter and enhancer region that provide binding site for transcription factor. Binding site for factor that organizes and maintain higher order chromatin structure. Non-coding regulatory RNA, more than 60% of the genome is transcribed into RNA that are never translated into protein, but which nevertheless can regulate gene expression through a variety of mechanisms. The two best studied variant, microRNA and long non-coding RNA, are described later. Mobile genetic element. Mobile genetic element एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपोजन्स. Remarkably, more than one-third of a human genome is composed of these elements, popularly denoted as jumping genes. These segments can move around the genome, exhibiting wide variation in number and positioning even amongst closely related species, that is, human and other primates. They are implicated in gene regulation and chromatin organization, but their function is still not well established. Special structural region of DNA, in particular telomeres, chromosomes ends and centromeres, मतलब chromosomes tethers. One of the reasons these findings have generated so much interest is that many and perhaps most of the genetic variation मतलब polymorphism associated with diseases are located in non-protein coding region of the genome. Thus, variation in gene regulation may prove to be more important in disease causation than structural changes in specific protein. तो आज के लिए इतना ही. हमने आज लगभग 2 पेज पढ़ लिया. ठीक है. सो यहाँ पर फिगर 1.1 बाद में देखेंगे. ठीक है. ये बहुत बार पढ़ेंगे. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसमें बहुत है. इतना सिंपलीफाई बुक ये नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं. इसे बार बार पढ़ने पर ऑटोमेटिकली पहले बुक के साथ अपना एक ट्यूनिंग बनाओ. ठीक है. सबसे बड़ा जो एक फीचर होता है ना, स्टूडेंट जब बुक रीडिंग करते हैं तो बुक रीडिंग करने से क्या होता है, एक ट्यूनिंग आपका सेट होता है. जब तक आप बुक के साथ आपका ट्यूनिंग नहीं
ट्यूनिंग कैसे आएगा? मैक्सिमम रीडिंग, ठीक है, मैक्सिमम राइटिंग, आपको राइटिंग भी करना चाहिए। जितने भी वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं, उसे आपको नोट डाउन करना है। तो ये सारा प्रोसेस है। और क्या करो, मतलब आजकल का तो गूगल ट्रांसलेटर आ गया, गूगल ट्रांसलेटर, तो आप रीजनल भाषा में इसे कन्वर्ट करिए, जैसे कि हिंदी हो गया, ओडिया हो गया, तमिली हो गया, तेलुगु हो गया, तो ये रीजनल भाषा में इसे ट्रांसलेट करो। फिर जितने भी आजकल के एआई प्लेटफॉर्म आया है, जैसे कि जेमिनी आ गया, चैट जीपीटी, डीप सीक, तो ये सारे के सारे मैं प्रीफर आपको हमेशा करूँगा कि आप डीप सीक यूज़ करो। डीप सीक अच्छा जानकारी देता है एंड हाईलाइट करके देता है, तो इसे भी यूज़ करो। या फिर आपको अगर कोई एआई प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है तो सेंटेंस बाय सेंटेंस मीनिंग, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग इसे करो, तभी आपको समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पर जीनोम क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, बस जीनोम के ऊपर थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दिया गया है, जो कि आपके लिए जानना तो वैसे सब ज़रूरी है। एंड ये अगर जानोगे, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये जितने भी होगा, आपके लिए थोड़ा बहुत तो आसान होगा। तो यही कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।